Ladies and gentlemen, good evening. Let me ask you a very simple question. What would you do if someone gets knocked down in front of you? You may know the person, you may not know the person. What is the right thing to do? The right thing to do is, and you would think that this is what most people will do, is to go and help that person, right? Because the person in front of you is bleeding. There is no one to help that person. You think the person needs medical attention. Simply put him into a car or an auto rickshaw and drive him to a hospital. That is the decent thing to do. Then why is it that in India, there is so much hesitancy to help people who get injured in road accidents? I'm asking you this question in respect to what happened in the national capital. Because what you're seeing on your screens happened on Saturday. There is an accident. The person who you see falling down is a 30-year-old. His name is Piyush Pal. He's a photographer, and one day he wants to become a filmmaker. The accident happens. The person who causes the accident, of course, speeds away, as you can see on your screens. That person was on a bike. Then see what happens. This is Panchsheel Park, by the way. This is a posh Delhi locality, and this is happening at around 9:45. So this is not 12 o'clock at night where there is no traffic on the roads. There are enough cars passing that area. What happens next is that this young boy on your screens is lying on the streets of Delhi in a posh locality. A crowd gathers around this young man. They are seeing him bleed. Do you know what they do? Do you know what these bystanders do? They film him. They make videos. Some even click selfies. This is what happens for 30 minutes. For 30 minutes, this young man is lying in a pool of blood, waiting for someone to help him. No one does. For 30 minutes, he bleeds, and they simply watch. Can you imagine? A young man bleeding in front of you, and what you're doing is clicking selfies? The stupidity and the apathy doesn't end there. As this young man is bleeding, life ebbing away from him every second, someone steals his phone. Can you imagine that for 30 minutes, no one takes this young man to hospital, and someone simply steals his phone? It was only half an hour later, at around 10:15, that a good Samaritan, Pankaj Mistry, appears, and with the help of some others, he takes Piyush to a nearby clinic. More time is lost because the clinic he was taken to did not have the necessary equipments to treat Piyush. Eventually, he was admitted to a multi-speciality hospital at around 11 o'clock. On Tuesday, Piyush succumbed to his injuries. The CCTV visuals which have emerged today and the police version are showing the 30-year-old was at fault for the accident. But his death, who's to be blamed for that, viewers? It's us. Us who have become a nation of bystanders. Pankaj Mistry was the only one in those 30 minutes who had enough empathy and decency to take this young man, bleeding young man, stranger, to a hospital. He's joining me on the broadcast. Pankaj Mistry, thank you very much for joining us here on Mirror Now. Can I ask you, what state Piyush was in when you saw him? And what made you help him, given the fact that for 30 minutes, no one else had? Ma'am, can you speak in Hindi, please? Pankaj, can you hear me? Okay. Yes, ma'am. We'll just try and fix the audio with Pankaj. Pankaj, can you hear me? Hi. I think he can hear us, but we can't hear him. So, guys, let's just try and fix that. Yes, ma'am. Mr. Azad, you're a former IPS Yes. officer. What is the problem with Delhi's DNA? There is a problem with Delhi's DNA because this is not the first time something like this has happened.
Well, that's right. I mean, we have discussed this issue on your channel many times, Shreya. And it's really heartbreaking how the young Okay, lives listen to are, fading away because of, Azad, apathy I can't and hear you. Maybe sheer. you'll have to unmute yourself. Mr. Azad, could you unmute yourself? To me, am I audible? Am I audible, Shreya? Mr. Azad, hi, go ahead. Good evening. Yeah. Can you hear me now? Okay, ladies and gentlemen. Yeah, I can hear you. Go ahead. Yeah, I'm saying we've discussed this a couple of times on your channel. It is the sheer apathy and the callousness of the Delhiwalas, which amazes almost everyone. One of the reasons is that nobody wants to get This is live involved. television. Things happen. Sometimes our teams simply don't get it right, and sometimes they do. We seem to be having an audio issue. Let me try and see if I can go to Pankaj Mistry once again. Just giving a last shot to if he can hear me. Hi, Pankaj. Good evening. Can you hear me? Could you say a hello to our viewers so I know you can hear me? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Hello. But can I speak in Hindi, ma'am? That we will Hello. probably Hello. revisit a little later in the day. If Pankaj can hear me, please, Pankaj, go Hello. ahead. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pankaj, can you hear me? Hello. Hello. Welcome back, ladies and gentlemen. A bit of a technical glitch. We are going back to the story from Delhi that is questioning the absolute apathy in India's national capital. You've seen the pictures. This young man knocked over by a fellow biker. The biker speeds away, and for 30 minutes, this young man lying in a pool of blood, and there is no one to help him. Passerbys simply taking videos or making selfies, but no one had the decency to put him into an auto and take him to a hospital. There was one person who did that, though, the Good Samaritan joining us on the broadcast. Thank you very much, Pankaj Mistry, for joining us here. मुझे एक बात बताइए, मिस्टर मिस्त्री, की इतने सारे लोग आधे घंटे के लिए किसी ने कुछ मदद नहीं की पंकज पीयूष की, वो खून से लथपथ है, खून बह रहा है, सब देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की. आपने मदद की. आपको क्यों लगा कि आपको मदद करनी चाहिए? दरअसल मैम मैं इससे पहले भी मैं 4-5 जनों को इसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा चुका हूं, तो मेरे को लगता है कि जिनको ज़रूरत है उनको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए. उनके लिए हमें एम्बुलेंस या पुलिस वालों का वेट नहीं करना चाहिए. तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए मैडम. और उस लड़के को देख के मुझे लगा था कि एम्बुलेंस तक का मैं वेट नहीं कर सकता और पुलिस वालों का भी वेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो ऑलमोस्ट उसकी ब्रीदिंग लॉस हो रही थी बिल्कुल धीरे धीरे. ठीक है, तो मुझे लगा कि मैंने मेरे छोटे वाले भाई को बोला, मैंने कहा इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये शायद बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर इसको हॉस्पिटल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बस मेरे को लगा कि उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. तो मैडम बस ये है कि उसको अगर थोड़ी जल्दी हम में से कोई भी अगर भाई अगर उसको थोड़ा जल्दी ले जाता तो शायद वो आज पीयूष हमारे साथ होता और बंदा बच जाता वो. तो पंकज, जब आप वहां पहुंची, आपने देखा कि आसपास लोग खड़े हुए थे, आपने देखा कि वो वीडियोस बना रहे थे, आपने क्या देखा जब आप वहां पहुंचे? एक्चुअली मैडम मैं जब वहाँ पे पहुँचा था तो क्राउड तो बहुत ज़्यादा था. तकरीबन 100 लोग थे वहाँ पे, 100-150 लोग होंगे जो पीयूष को घेर के खड़े थे. और रोड भी ब्लॉक हो गया था ऑलमोस्ट. तो कुछ लोग मैं जब वहाँ पहुँचा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि अरे यार एम्बुलेंस नहीं आया अभी तक, काफ़ी देर हो गया फ़ोन किया, अरे यार पुलिस वाले नहीं आए अभी तक. तो उतने में एक एम्बुलेंस आई. एम्बुलेंस हमें लगा शायद एम्बुलेंस ही है, क्योंकि मेरे को जस्ट पहुँचे हुए 10 सेकंड हुआ था. तो एम्बुलेंस आई, तो एम्बुलेंस को हाथ दिया किसी ने, वो रोका नहीं, वो सीधा चला गया.
तो मैंने कहा भाई इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को कोई सपोर्ट करो, मेरे को 1-2 बंदे सपोर्ट करो, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा देर रहेगा नहीं वैसे। तो मैडम मेरे पहुँचने से मुश्किल से मैंने 30 सेकंड के अंदर उसको ऑटो किया और ऑटो करके सीधा हम लोग रॉन्ग साइड को चले गए क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि मैक्स हॉस्पिटल वॉकिंग डिस्टेंस में रॉन्ग साइड में। तो हम लोगों ने रॉन्ग साइड से ही मैंने कवर किया, मैं फ्रंट पे चल रहा था और मैं गाड़ी वालों को बोल रहा था प्लीज़ साइड हो जाओ, एक्सीडेंटल केस है, एक एक्सीडेंटल केस है, प्लीज़ साइड हो जाओ। ऐसे करके मैक्स तक लेके गए तो मैक्स वालों ने बोला कि ये बंद हो जाता है 6 बजे, आप साकित लेके जाओ इसको, साकित ले जाओ, वहाँ पे मैक्स खुला हुआ है। तो हम लोगों ने वहीं से ऑटो को घुमाया, घुमाने के बाद सीधा मैक्स लेके जाने वाले थे तो हमें रास्ते में PSRI हॉस्पिटल मिल गया, हमने वहाँ एडमिट कराया उसको। कुछ बात हो पाई? पीयूष की हालत खराब थी पंकज, ये तो मैं समझ रही हूँ आपकी बात से, लेकिन क्या पंकज से कुछ बात हो पाई? उसने कुछ आपसे कहा? मैडम वो अनकॉन्शियस था, उसकी वो होश में नहीं था बिल्कुल भी क्योंकि एक्चुअली उसके ब्लड बहुत लॉस हो गए थे वहाँ पे और ऐसे क्लॉट जम गए थे बहुत सारे और वो भी पड़ा था काफ़ी देर से वहाँ पे और उसकी हार्ट बीट ऑलमोस्ट धीरे धीरे बंद ही हो जा मतलब ऐसा फील हो रहा था हमें वो बंद हो जाएगा। तो मैंने एक बंदा जिसने सपोर्ट किया था आर्या, उसका भाई ऑटो पे बैठा, उसको लेके मैंने बोला आर्या भाई आप ना इसको ऐसे, आर्या के छोटे भाई को बोला आप इसके चेस्ट को इस तरीके से प्रेस करते करते ले चलना है, आप रुकना नहीं प्लीज़। हाँ, तो उसके चेस्ट को प्रेस करते करते हम लोग हॉस्पिटल तक लेके गए उसको। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो हमने उसे वेंटिलेटर पे अंदर रखा, रखने के बाद तो हमने उसको जब मशीनें लगाई तो पता हमने ऊपर देखा उसका ऑक्सीजन लेवल 58 पे आ गया था और हार्ट बीट भी ऑलमोस्ट बहुत स्लो हो चुकी थी उसकी। तो ऑक्सीजन लेवल उसकी 58 पे आने के बाद हम बहुत घबरा गए, तो हमें इमरजेंसी में बाहर निकाल दिया। हमें निकालने के बाद जो जूनियर टीम थी उन्होंने सीनियर टीम को इन्फॉर्म किया और सीनियर टीम जब आई तो उन्होंने कोई हार्ट प्रेस कर रहा था, कोई ये प्रेस कर रहा था, कोई ऑक्सीजन दे रहा था, कोई इंजेक्शन दे रहा था। तो ऐसे 1 घंटा हो गया। 1 घंटा होने के बाद उन्होंने हमसे सवाल जवाब पूछे। उतने देर में पुलिस वालों का भी फ़ोन आ चुका था मेरे पास और सवाल जवाब पूछने के बाद मेरा डिटेल वगैरह लिया। लेने के बाद उसके बाद मैंने कहा मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए, आप मेरे को एक बार अपडेट दे दो कि लड़का कैसा है। तो मेरे को अंदर नहीं जाने दिया, पर वहाँ के एक स्टाफ बॉय ने बोला कि अभी ठीक है, लड़के के ऑक्सीजन भी 80+ आ गया है, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गया है, लेकिन वो क्रिटिकल है, तो आप में से कोई इसके घर को इन्फॉर्म कर देगा। मैंने कहा मैं उसको जानता नहीं हूँ और मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है। तो उसने बोला उसका बाइक का नंबर। तो फिर मैं वहाँ पे गया मेरे भाई को पिक करने के लिए, तो मैंने उनको फ़ोन करके स्टाफ बॉय को बाइक का नंबर बताया, उन्होंने उससे उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है Pankaj, what I'll say, Pankaj Mistry, is that we need more citizens like you. We need more public-minded citizens like you. We don't need indecency in this city, and God knows there is enough indecency. We need more humanity in the city and the city's roads. Thank you very much. You tried. Unfortunately, Piyush couldn't survive this apathy that he saw on Delhi's roads. Pankaj Mistry, thank you very much for joining us on the broadcast. Ladies and gentlemen, with that, it's a wrap from me. My colleague Nivedana is joining you next with all the day's top stories. Do stay with us.